Our students conference pra Mokokchung district bitor hostel aro paying guest kanimite notun guidelines issue korishi student khanaga safety nimite. BJP laga Northeast in charge Sambit Patra to talaga New Delhi Residence Day state laga development or progress laga key issues upor budget kurble Nagaland CM or Deputy CM ke log korshe. Dimapur Day September 27 day run for green witness kurble ase jinto National Clean Air Program under day district administration DMC or alak alak NGO kan pra milikina ayojan korshe. Mata Tripura Sundari Temple Day Prime Minister Modi pra development project shuru kuri dia pachide opposition nahole royal family kun ke bi swagat nakra nimdi bishi jhamela olaise. Hello viewers, Chanchan Kasar Nltv News now de apnansu ke swagat kori ase IB khobor kan janai dio. Our students conference pra Mokokchung district bitor hostel aro paying guest kanimite notun guidelines issue korishe student kanaga safety nimite sub hostel PG Malik warden aro guardians kan ge niyam khan bal pra palan kurble janaise niyam laga hisab de hostel kan de maiki aro mota khan alag room khan du alag hobo lagi kushe aro ekjon laga room de najabo lagi kushe sub exit point hall study room Jalaga site kande CCTV dalikina thakibo lagi kushe hostel laga security nimide itu logot phone khan olop homoy chilabole dikina warden logot handover kuri dibo lagi kushe student kun khan laga ghor manu Mokokchung laga bahar de thaki taikan pura ekta local guardian to approve kurikina thakibo lagi kushe aru dusra student khan pura guardian hoikina thakibole naparibo kushe jodi kunba pura ragging hoile dusra student ke assault kurishi kole taikan ke ulai dibo kushe Sub hostel khan fire extinguisher aro medical kit thakibole lagi aro tobacco alcohol nahole drug khandu pura puri banned ase kushe etu logot sub hostel khan AKM office pra register kurikina thakibo lagi aro no objection certificate rakhikina thakibo lagi kushe South 2026 academic session pra shuru kurikina maiki aro mota class 8 opor de hostel de alak kuri dibo lagi aro student khan ge safa nutrition aro hygienic saman khan khilabole lagi kushe Paying guest nimide class 12 opor khan ahasal pra PG de thakibole parbo kushe AKM pra janaise ki tai khan regular check kuri thakibo aro niyam palan nakra khan opor kara kadam uthabo kuikina janai dise Dimapur Day September 27 din run for green witness kurble ase kote National Clean Air Program under day District Administration Dimapur Municipal Council aro alak NGO kan milikina ayojan korishe even day mota aro maiki kan karne 8 km run aro junior boys aro girls karne 4 km run feature kurbo kote prize pool do rupees 80,000 hobo koishe edu run to bia air quality aro ula laga urgent health issues kan ke highlight kurbo koishe Registration to 5 am pra shuru kurble ase edu opor arobi janibole ahibi reporter moilong laga detail report saiso department aji mokan yede jama korina thaka to aji do something we want to talk about health issues something about positive things which we want to improve Dimapur edu la kotha kobo edu ane first of its kind in Dimapur mokan different departments aigina convergence DMC in collaboration with many departments like District Administration Dimapur, Development Authority of Nagaland, Department of Environment and Climate Change, Nagaland Pollution Control Board, National Youth Climate Consortium. At the same time, many NGOs, non-governmental organizations have come forward for this very important event run for Clean Dimapur, like Earth Alliance, Pro-Rural, Team Better Dimapur, Can Youth. Run for Better Dimapur laga the purpose of this event and I want the media houses to kindly disseminate this information sob jagade all over Nagaland, all over the country apni khan etu information to pass kori disi gole we want to make it a big event it was say 5,000 6,000 mano etu run for Dimapur de participate korisi gole to kiman bhalo hobo na for Dimapur, for greener Dimapur, for clean Dimapur mogan sob etu
run for Green Dimapur organized Korea. And this event is a part of National Clean Air Program, under which Dimapur has been identified as one of the non-attainment cities in terms of air quality. That means mogan laga air quality to bhal nai. Itu arne NK pura air quality kinaga improve hobole, kinaga mitigate hoi kina mogan fresh air khabole, breathe koribole. Itu nimide program ase. The program aims to reduce particularly the particulate matter concentrations. Greening initiatives such as tree plantation and urban forestry are crucial components of this effort. One of the objectives of NCAP is there is a particular platform called My Bharat platform. Itu youth khan ge empower korigina nation building karne noile environmental protection karne platform ekta ase, very important platform for especially for the youth. My Bharat platform goina ase. Itu one youth khan borai tade register korigina nation building de participate koribo dibo karne aji mokan Atoizu Jubilee Hall de Adi Karmayogi Abhiyan laga block level workshop loise. EACR block nodal officer Dr. Samuel Akho Konyak pra lead korise. Master trainers pra departmental convergence grassroots implementation or participatory planning laga upper session dishe. Local council members, VDB secretaries, Anganwadi workers, Ashas, SHGs or CSOS pra participate korise. Confederation of All Nagaland State Service Employees Association pra September 3 day sub-district headquarters de protest hoi thaka nishna All India State Government Employees Federation ke support kurikina taikhan laga Kohima office de sit-in protest kurise. CNSSEA leaders Zumbemo Lotha, Sanglao aro Avizo Nenu pra koshe ki taikhan do AISGEF laga 11 demands ke support kure. CNSEA to idu demand submit korbole Chief Secretary Nagaland ke lock korbo koshe. Taikhan pra protest to state employee laga right aro welfare ke bachabole nationwide effort laga hissa ase koshe. IB to more detail pra saisao. The program which we have organized for the sit-in dharna, which is in compliance with the call given by All India State Government Employees Federation. This phase-wise program has been chalked out by the Central Federation, where we have held the general strike on 9 July 2025, and in continuation, we have again organized this sit-in dharna. And in the near future also, this may continue till the goals are achieved. The 11th charter of demands set by the All India State Government Federation, you all know that we have handed out to you last time also. So even if you need today, we'll hand it out. These are the demands, which are not some are not so pertinent to our state also. So we have chosen out 5 demands for our state, and we have placed in our charter of demands, especially for Nagaland state. And we are also, after this press briefing, we'll be meeting our Chief Secretary and hand over the representation to Chief Secretary at 12. Continuation with the previous protest. One of our main agenda is to scrap NPS and restore OPS. Here we are talking about restoring the lives of people. Here we are talking about securing the life of lakhs of people. Here we are talking about securing the life of the old age parents and grandparents after retirement. We are continuing this agitation. The government is silent. The government is not responding to any of our representation and letter. And I'm afraid if this continue, this might lead our good governance to a failure government. This NPS is going to drag lakhs of people into the market, and I'm afraid that this might be a downfall and the biggest challenge of the state government of Nagaland. And therefore, I appeal and request the government. There might be challenges, implications, problems, but I'm sure there will be possibilities, ways and means to find a way and to restore back the OPS. And therefore, I appeal to the government to kindly respond
and get back to us for the welfare of our employees, for the welfare of the citizens of Nagaland. Thank you. Months, some issues which state alone cannot take up unless the central government come in, and this is relating to all states, like reversion of NPS to OPS. Some rich states, they have already returned back because they have enough resources, but as states like northeastern states or any other states, I think it may take time unless the central government come in. So that is why we are supporting the movement led by All India State Government Federation for the union government to scrap the PDRFA Act and roll back from NPS to OPS. So let us hope that in not so distant a way the government will at least hear the voice of its employees. The program which we have organized for the sit-in dharna, which is in compliance with the call given by All India State Government Employees Federation. This phase-wise program has been chalked out by the Nagaland University laga Vice Chancellor Professor Jagdish K. Patnaik pra Fishes of Nagaland Status and New Additionals koikina ekta notun kitab release korise. Kudi Nagaland University laga Associate Professor Dr. Pranyep Punj Pankaj aro Mogokchung Faisal Ali College laga Assistant Professor Rejuba Pongenbi author thakise. Kitab to academic publisher and distributors Lucknow India pra publish korise aro itu kitab pra Nagaland fish water laga fish species kan offer kuribo juntu pra region rich aro unique aquatic biodiversity kan highlight kuri ase. Release wa laga even day Professor Bendang Au, Professor Ranjit Kumar aro Dr. Lobeno Mozu pra hissa loise. Lumami Nagaland University pra one-day workshop organize korise. Northeast India te language opor workshop loise. Naga Tribal Language Studies Nagaland University laga center pra organize kora laga ase. Northeast Institute laga Language and Cultural Director Dr. Vijay A. D'Souza pra resource person thakise. Dr. D'Souza pra tinta session lead korise aro language endangerment efforts laga mixed emotions aro Rozo Aka language day tai laga kam opor focus korise. Nagaland laga scholars, faculty aro community members kan pra participate korise kuikina jani paise. Assam laga musical iconic Zibon Garg ke Tuesday de alak political leaders aro ghor manu kan pra taikan laga final tribute dishe pura state honor pra tai laga cremation na hua agede. Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Union Minister Kiren Rijiju, Sarbananda Sonowal aro Pabitra Margarita Khanpra, singer ke cremation site Karma Kuchi de homage dishe. Bollywood singer Papon Prabi Zuben ke last tribute dishe. Zuben laga 85 saal Baba Mikey Garima Sakyabi Milikina. Alak state leaders, colleague, friends aro fans kan pra cremation ground visit korise. Zuben ke akhri bar sabole nimite. Zuben ke pura state honor logode Karam Kuchi NC Bosti de cremate kuribo juntu Guwahati Sport Complex laga 20 km ase. Like fans, well wishers aro celebrities kan pra take Sunday de homage dishe. Mata Tripura Sundari Temple de Prime Minister Modi pra development project shuru kuri dia pishide Congress aro Tripura Mata Party pra Monchida Janai kina koshi ki even they opposition oile royal family kun ke bi swagat kuranai. Tripura Tourism Minister pra Janai ki guest laga list kando Prime Minister's office pra approve kura laga thagishe aro Tripura Mata laga kunba leaders kan pra bi mojo thagishe koise. Takhan pra Janai ki even though chutu office laga order hisab de chutu thagishe chuli thagishe itu ekla noikina Tripura Mata MLA pra Janai ki royal family members kan ge invitation pathaishe holebi even size to limited thaka nimide ekjon representative ke hi matishe. Congress prabi opposition ke swagat nakra nimide sawal korise. Itu nimide Tripura laga power minister pra Janai ki final guest to PMO pra faisla loise aro jodi kunba kan mon khushi napai kina ase kule taikan pra mafi mangi kina ahibule laga homoide niga galti aro nahobo kuikina janai.
Siliguri West Bengal de idu sal de ekta 51 feet lamba Durga idol laga devotees kanke ashirwad dibo koshe. Artisans kanto swastika yuvak sangha pandal de festival shuru nahwa age de idol complete kurubole mehnat kure ase koshe. Organizers pra koshe ki itu 51 feet Durga idol du North Bengal de sobse lamba Durga idol hobole ase. Tekhan pra celebration homoy dangur crowd ke manage kurubole special agreement banaishe. Idol do main attraction hobole set ase koshe. Durga Puja do September 28 pra October 2 tak manabole ase. ये बात है कि सबसे पहले हम लोग नॉर्थ बंगाल में जो 51 फीट माँ दुर्गा का जो है वो मूर्ति हम लोग लिया था। सबसे बड़ा क्या नॉर्थ बंगाल में यही सबसे बड़ा है। प्रीवियसली ऐसा बड़ा पूजा कोई क्लब ने चैलेंज हिसाब नहीं लिया, हम लोग चैलेंज कर ले लिया। अभी टोटल वर्ल्ड जैसे है अस्थिरता में चल रहा है, वो ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग इतना बड़ा ठाकुर जो है उसको बुला के हम लोग एक माँ का जो आशीर्वाद सब क्राउड मैनेजमेंट जो है ये पहले हम लोग का हम सोचे थे लोग जो ये जो रास्ता है ये है ऐसे कैसे हम लोग कंट्रोल करें, इसीलिए ये रास्ता बहुत बड़ा है विवेकानंद रोड, वहाँ से हम लोग बंद कर देगा गाड़ी का एंट्री, इधर से भी बंद कर देंगे। और हम लोग का बहुत सारा वॉलंटियर्स है, प्रशासन से भी हम लोग को मिलेगा। तो ये सब करके हम लोग खुद क्लब का भी बहुत सारा आदमी है जो लोग है वो लोग कंट्रोल की बात है कि सबसे पहले हम लोग नॉर्थ बंगाल में जो 51 फीट माँ दुर्गा का जो है वो मूर्ति हम लोग मणिपुर कंगपोपी पुलिस पर सितंबर 17 लगा मॉडबोंग असॉल्ट केस से एक जन के गिरफ्तार करेছে। गलतकार लगा नाम दो 29 साल सेबेम लोबन आसे और ताई पर तांखुल नागा ऑटो ड्राइवर के असॉल्ट करेছে। पुलिस पर खुशी की सेबेम तो ड्रग एडिक्ट आसे और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एको टीवी जुरी किना नाई करेছে। पुलिस पर मामला पर छानबीन কৰি আছে। इटा खाता ब्रेक लबो साइट की Nltv। Welcome back viewers, IB खबर कनार जनाइदो। बीजेपी लगा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पात्रादो तलगा न्यू दिल्ली रेसिडेंस डे स्टेट लगा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस लगा की इश्यूज ऊपर बातचीत करबले नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफ्यू रियो और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीआर जेलेंग के लॉक करছে। मीटिंग दो पात्रा लगा आजिकली मणिपुर ते विजिट करा पिछदे होइছে कोदे ताई प्रा चुली थका शांति और सिक्योरिटी सिचुएशन के एड्रेस करबले एमएलए सिविल सोसाइटी ग्रुप और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और बिशी स्टेक होल्डर्स का लगत एंगेज करছে। मीटिंग दे नॉर्थ ईस्ट रीजन दे बीजेपी लगा एफर्ट के हाईलाइट करছে और लोकल लीडर्स और कम्युनिटीज खान लगा कंसर्न के एड्रेस करছে। की स्टेक होल्डर्स खान लगत एंगेज करिकिना पात्रा दो रीजन लगा चैलेंजेस इमिडिएट सॉल्यूशन बिचारबले और शांति डेवलपमेंट के प्रमोट करबले मकसद राखिছে। ओडिशा चीफ मिनिस्टर चिरन मोहन माझी प्रा एकता कस्टडियल डेथ कंप्लेंट पा पिछदे चौवार पुलिस स्टेशन कुतक लगा एसीपी बिस्वा रंजन साहू के सस्पेंड करेছে। रासानंदा नायक खुन के गाड़ी चोर हुआ पर एक्यूज करेছে ताकि मंडे दिन दे कस्टडी दे লৈ দিছে। तलगा माइकी और एलिक करेছে कि पुलिस प्रा ताकि बिशी बिया प्रा मारिছে ताकि क्रिटिकल कंडीशन दे एससीबी मेडिकल कॉलेज एडमिट करेছে हलिबी राति दे तलगा मौत होइছে कइছে। ताई मुरजा लगा एग्जैक्ट कारण ऊपर छानबीन चले आसे। आगे दे एसपी निरंजन गोदा और कांस्टेबल कमल लोचन माझी भी सेम केस इमिडिएट सस्पेंड होइছে। पुरी दे एकता अलग केस दे एकता जवान छुकरी के एलिजिडली गैंग रेप करा निमित्ते पुलिस पर दुजन मानु की गिरफ्तार करेছে। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिव्या ज्योति पारिदा प्रा कइছে कि पूछताछ तो चले आसे। फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक प्रा हादसा के शॉकिंग कइছে और कारण कारा कदम उठाबो कइकिना विश्वास दिलाइছে। लखनऊ दे एकता माइकी के ताई प्रा रिलेशन दे थका माइकी लगा भाई प्रा ताकि मरा दिছে। पुलिस प्रा अली अब्बास लगा बाबा हिसाब ताई लगा बच्चा 4 साल निश्ना ज्योति नाम लगा माइकी लगत रिलेशन दे थकिছে কৈ আছে। अब्बास नाम लगा माइकी एकता प्रा ताई लगा भाई प्रा ताइजन लगा शादी
কৰি দিবলৈ কথা খান কৰিবলৈ লগ কৰিবলৈ মন থকা নাই গৈছে লক্ষ্ণৌ ডিচিপি বিশ্বজিৎ শ্ৰীবাস্তৱা পৰা তাইখান পৰা মিলি কিনা এইটো মানুহকে ধোকা দি কিনা মৰাই দিছে কৈ কিনা জানি পাইছে ये एक युवक जिसका नाम अली अब्बास है और उसकी उम्र 28 साल है उसकी कुछ लड़कों द्वारा सर के पीछे से वार करके चोटिल कर दिया है और वो अचेत अवस्था में लकड़ मंडी क्षेत्र में गिर गया इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर सादतगंज मौके पर पहुंचे और उसके परिजन युवक के भी पहुंचे उनके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई शव का पंचायत तमाम बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया मृतक के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में बताया है कि उनके बेटे का प्रेम प्रसंग एक लकड़ मंडी की एक युवती से चल रहा था और आज देर रात में उसके घर वालों ने लड़की के माध्यम से शादी की बात करने के लिए लड़के को वहाँ बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसके भाई और कुछ लोगों ने उसके ऊपर वार कर दिया जिससे वो अचेत होकर गिर गया ये एक युवक September 23 day Delhi High Court pra Sub Inspector Nirendra K lawyer logot biya bartaf crime day criticize korise khobor hisab Sub Inspector Nirendra to Okla Industrial Area Police Station pra thakise aru tai pra court bitor lawyer logot biya bartaf korise kitia court Ramesh pra Delhi NCT State Government against court khota kori thakise Justice Arun Monga pra officer kun law laga palan koribo lagi tai pra hi predator nishna bartaf korise aru dusra council kan logot misbehave korise koise judge pra koise ki uniform le thaki kina iniga biya bartaf to acceptable nohoy court pra FIR nimide order dibole thakise hoilebi officer pra mafi manga piside chari dise itu logot justice moga pra aha din dei affidavit logot ekta official letter likhi kina submit korobole janaise Kerala Kannur laga Defense Security Corps Center day via email pra bomb threat paise koi ase police aro bomb squad kan jaga de jaldi punchi kina inspect kori ase aro khobor kan rukhi ase koise Kolkata de mausam bishi biya hoi kina aro pani giri kina Tuesday din Indigo Airlines pra travel advisory issue korise aro passengers kan ge taikhan nijor laga flight status check kori kina jaldi airport nimite ulai jabole janaise kile kile pani flood pra rasta kan bishi flood hoi kina ase khobor hisab khali ekta flood jindu Pune pra Kolkata khali ekta flight jindu Pune pra Kolkata jabo thakise etuke Bhubaneswar de divert koribole ulaise aro dusra kandu bhal pra operate korise hoilebi Kolkata laga dusra jaga de pani flood hoi kina bishi traffic laga jhamela ulaise aro train service kan bi cancel kori dise UP laga Saharanpur de 16 policemen ke suspend korise careless hua pra aro khas duties jenika Navratri security aro ma Sakumbari Devi fair to permission nalokina skip krani mide SSP Ashvish Tiwari pra koshi ki tu kadam lwa to police force ki kara discipline banai kina rakhibole nimide ase ta pra koshi ki carelessness aro niyam ke bhanga to allow na koribo officials hisab suspend hoja corps ke sensitive deployment de assign kori kina thakise hoilebi permission athiki kina absent thaka pichide taikhan ke suspend korise SSP pra koise dangor religious event homoy law or order banai kina rakhibole bishi zaruri ase aro etu de fail hoise koile kara saza dibo koise कि 16 ड्यूटी लगाने के दौरान में ये अवगत हुआ कि 16 पुलिस कर्मचारी लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं और इसमें 4 कांस्टेबल 3 हेड कांस्टेबल 2 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक साथ में 6 रिक्रूट कांस्टेबल ये गैरहाजिर चल रहे हैं तो इनकी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है उसको जांच उपरांत किया जाएगा ड्यूटी लगाने के दौरान में ये Chhattisgarh Janjgir Chamba district te ekjon manu pra talaga uncle ke kala jadu kore koi kina morai dise etu khobor do Monday din police pra khulasa korise Champa police station officials pra koshi ki ghatna do sandesh sham kute Kota Dubri locality te hoa laga ase galatkar laga naam Ajit Pal ase victim ke hospital de loi jise hoilebi doctor pra talaga jan bachabole para nai police pra ita mamla por chanbin kori ase
डबरी एक बस्ती है, वहाँ कल खबर मिली रात को कि कोई अज्ञात बुजुर्ग सड़क पे पड़ा हुआ है। उस सूचना में जब पुलिस गई तो देखा कि वो खून से लथपथ है और कोई धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है। उसका पता करने पर पता लगा कि वो राम प्रसाद पाल है, वहीं रहता है, 60-65 साल का है। और आसपास वाले लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ चालू किया तो पता लगा कि कोई व्यक्ति है जो कि उसको हंसिया मार के भागा है। आगे फिर पता करने पर पता लगा कि अजीत पाल नामक एक उसका भतीजा है जो कि सामने ढाबा चलाता है और वो भागा है उसको मार के। तो पुलिस तुरंत ही धरपकड़ में लगी और कुछ देर में पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो ढाबा चलाता है और उसका जो चाचा है, ये मृतक, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ ये सब में लगा रहता है। तो उसको ऐसा लगा कि इसके ढाबा में बिक्री कम हो रही है, चल नहीं रहा ढाबा, लोग आ नहीं रहे। तो उसकी जो है ढाबा ना चलने का कारण जो है तंत्र मंत्र करने का कारण हो सकता है। तो उसने इस डाउट में ये मेरी मुनाफे को कम कर रहा है करके पहले भी 1-2 बार उसने उसको बोला था कि ये सब मत करो। तो लेकिन उसको अंधविश्वास के कारण ये था कि चाचा के कारण ही हो रहा है, इसलिए भतीजे ने चाचा को हंसिए से मार के वहाँ मार दिया था और फरार हो गया था। बट पुलिस ने जो आसपास के लोगों से पूछताछ की उसके आधार पर उसको पकड़ के अभी जेल भेज दिया है। डबरी एक बस्ती है, वहाँ कल खबर मिली रात को कि कोई अज्ञात इंदौर रानीपुरा एरियाते मंडे राति बिशी पानी गिरा समय 3-story बिल्डिंग गिरिकिना एकटा मोटा और माइकी मुरी जेशे डेब्रिस लगा नीचे दे फासिकिना थका 12 मानु के बचाइशे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ते एडमिट करि दिशे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा प्रा 14 मानु बिल्डिंग बिटर दे फासिकिना थाकिशे कोइकिना जनाइशे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करिकिना डेब्रिस क्लियरेंस करा लगा काम करि आसे। इदु एरियाते सेफ्टी मेजर्स करने इलेक्ट्रिसिटी काटि दिशे। देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया। और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई हैं और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है, जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। घटना को लेकर क्या कुछ लग रहा है, कैसे क्या घटना हुई? देखिए, अभी तक प्रशासन का पूरा फोकस था कि सभी लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाए और उनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। और अब चूंकि ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम लोग अभी मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी पड़ताल करी जाएगी कि क्यों ये कोलैप्स हुआ या घटना क्यों हुई। इसके हम लोग कारणों को और एग्जामिन करेंगे। देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई न्यूयॉर्क यूएन जनरल असेंबली दे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रा EU फॉरेन मिनिस्टर्स लगा स्पेशल इनफॉर्मल मीटिंग दे हिस्सा लैसे। कोटे EU हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कालास प्रा होस्ट करछे और इदु मीटिंग दे ब्राजिल और मेक्सिको लगा मिनिस्टर्स खान प्रा भी शामिल होइसे। मीटिंग दो ग्लोबल जमेला मल्टीलिटरलिज्म इंडिया EU पार्टनरशिप यूक्रेन वार गाजा क्राइसिस एनर्जी और ट्रेड खंडे ध्यान दिकिना लैसे। जयशंकर लगा व्यूज खंडो एप्रिशिएट करिसे और EU एम्बेसडर हर्व प्रा तेलखान लगा सिग्निफिकेंस के हाईलाइट करिसे। EU प्रा मल्टीलिटरलिज्म फ्री ट्रेड और UN चार्टर दे कमिटमेंट दिया खान ऊपर खालास प्रा रिएफर्म करिसे। ABC पर खुशी की जिमी किमेल तो ट्यूसडे दिन तलगा लास्ट नाइट शो दे वापस आई बोले ऐसे तखन तो होले अलग दिन आगे दे चार्ल्स किर्क असैसिनेशन लगा ऊपर दे कंट्रोवर्सी रिमार्क दिया करने सस्पेंड कर दिकिना थाकिसे। नेटवर्क पर किमेल लगते बातचीत करा पिछले तलगा शो वापस चलावले फैसला लैसे। तपर मोनोलिक ते मेगा लैंड ऊपर दे क्रिटिसाइज करिसे और शूटर लगा आइडियोलॉजी के कमती दिखाइसे जिन पर बिशी प्रोटेस्ट उलाइसे। प्रेसिडेंट ट्रम्प और कुनबा एफिलिएट्स और FCC पर भी निंदा करिसे। हले भी 400 ऊपर सेलिब्रिटीज पर फ्री स्पीच लगा साइट दी ताकि सपोर्ट करिसे।
Kimal 2003 pra show host kuri kina ase aro etia political pressure laga beach wapas ahi ase. Canadian police pra Khalistani terrorist Inderjit Singh Gosal ke Ontario jaga pra giraftar korise talga opor firearms charges thaka karne dhurise Gosal Ben Group Sikh for Justice lagot link ase koise British Columbia de June 2023 Gurudwara laga bahar Khalistani figure Hardeep Singh Nijjar ke Moraida Devi link ase koise Nijjar Morija karne Indian Canada ties biya hoise Canada laga notun PM Mark Carney pra Indian logot relation bal banawale laga maksad nimide giraftar korise ja hafta de New Delhi de duida countries laga top security officials majuti khota korise Vietnam Airlines और Singapore Airlines तो एक नतुन code share agreement sign करिছে जिन October 26 পৰা শুরু হবলে আছে Singapore Airlines तो Vietnam Airlines flight de Singapore Hanoi और Singapore Ho Chi Minh City bitorde code share करबो और Vietnam Airlines तो Sia flight de Singapore Da Nang Singapore Hanoi और Singapore Ho Chi Minh City bitorde code share करबले আছে कुছে इदु flight तो regulatory approval पा पिछदे October 10 পৰা sale de jabole আছে Duida Airlines pra kushi ki partnership to passenger can ge bishi light choices easier connectivity or bal travel experience dibole nimite ase takan pra ITB kushi ki partnership to Singapore or Vietnam majode economic or tourism link ke mazbut banawale madad korba nimite ase Washington DC de White House press secretary Caroline pra Monday din kushi ki witness Western nations pra Palestinian state पहचान करबले लगा फैसला पर Palestine President Donald Trump pra मंजूर नाई कोशे लेविट pra कोशे कि Trump लगा प्रायोरिटी तो गाजा ते हॉस्टेज खनगे छाड़ी दिबले और लड़ाई कुरी थका खत्म करबले लगा आसे लेविट pra कोशे कि Trump लगा UN स्पीच दे इश्यू पर एड्रेस करबले आसे Trump administration pra Antifa jinto ekta domestic terrorist organization ase ite officially alan korise press secretary Caroline Levitt pra koise ki President Trump to designation formalized global executive order sign korise Antifa to ekta violent radical left terrorist organization ase jinto nimide President Trump to domestic terrorist group hisabte execute order designate jaldi sign koribole ase Levitt pra ICE faculty opor hamla police officer opor assault pro life center de fire bombings ke milaikina violent hatsa ke side korise tapra koshi ki White House to Antifa laga funding network ke chanbin koribo order to domestic political movement laga first federal terror designation ke mark kore koise Antifa is going to be designated a domestic terrorist organization. The president intends to sign that executive order very soon as it's drafted, as soon as today, later this afternoon. And this is something the president campaigned on because we have seen a rise in violence perpetuated by Antifa radical people across this country who subscribe to this group. And unfortunately, it's gone widely uncovered by many in the legacy media. It also went completely ignored by the previous administration. Not anymore. Not only, as you mentioned, were the bullet casings subscribed with Antifa mottos, if you will, in the heinous assassination of Charlie, but there have also been more examples than I could read off for you here in this briefing room today of violence from Antifa. I will just read a few. In July 2025, several members of an Antifa cell ambushed and opened fire on officers at an ICE facility in Alvarado, Texas, shooting one officer in the neck. Also in July 2025, 3 Antifa members were charged with assaulting a police officer during a violent riot outside an ICE facility in Portland, which for weeks prior had been under siege from the local Antifa terror cell
In February 2024, a transgender Antifa terrorist detonated an explosive device outside of the office of the Republican Attorney General of Alabama. In July 2023, Antifa members linked to abortionist group Jane's Revenge firebombed pro-life facilities and vandalized churches. In January 2022, a suspected Antifa member was arrested for bringing a pipe bomb to a pro-Trump event. In January 2021, an Antifa supporter threatened to shoot police officers and Trump supporters outside of the Florida State Capitol building. Again, I could continue to list many more examples for those in the room who don't believe this is a serious threat to American safety and our national security, but this administration knows that it is. That's why the president will be signing this order. And we will also be, most importantly, looking at who is funding Antifa and who is funding these other violent left-wing groups that we've seen perpetuate so much crime and mayhem across our country. Antifa is going to be designated a domestic terrorist organization. America President Donald Trump Prajuddin Pakistan laga Prime Minister Shehbaz Sharif ke Washington DC te log pabole ase. The meeting to United Nations General Assembly laga 80th session homoy de ase. Trump pra laga second term laga first unga speech dibule ase. Kodi tai primary ka laga takot global conflict khatam kuri dia aro at moina bitori tai kan laga achievement opor khota kurobole ase. Trump aro bi claim kurobole pare ki India Pakistan laga beach conflict to tai pra khatam kuri dishi koikina. Hoilebi India laga hisab conflict to military level te direct samjhota hoikina khatam hoise. Trump ra UN Secretary General Antonio aro Ukraine Argentina aro EU laga leaders ke bi log kurobole ase. Etu pichide tai ekta multilateral meeting bi lobole ase. Kodi Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, UAE aro Jordan laga leaders shamil hobole ase. Tonight, the president will depart to New York City ahead of the 80th session of the United Nations General Assembly. He will be joined in New York City by the First Lady. Tomorrow morning, President Trump will deliver a major speech touting the renewal of American strength around the world, his historic accomplishments in just 8 months, including the ending of 7 global wars and conflicts. The president will also touch upon how globalist institutions have significantly decayed the world order, and he will articulate his straightforward and constructive vision for the world. The president will also be hosting bilateral meetings with the UN Secretary General and the leaders of Ukraine, Argentina, and the European Union. The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. After these important meetings, the president will attend a reception tomorrow night with more than 100 world leaders before returning to Washington, D.C. Tonight, the president will depart to New York City ahead of the 80th session of the United Nations General. Former Indian player Dinesh Karthik to Hong Kong Success Limited Team India laga captain hoise jinto 7 November pra shuru hua laga ase. Ta laga experience to test batting karne jani jai. Karthik pra koshe ki tai nimide itu to ekta dangor honor ase aro tai to team ke fearless aro entertaining cricket khilikina jitabole mon ase koshe. Cricket Hong Kong China laga chairperson Barji Shroff pra Karthik laga swagat koshe aro tai laga leadership ke tournament nimide lab hobo koshe. India do Monday day SAF Under 17 Championship match day Pakistan ke 3-2 goal pra harai dishe. Duita team bi semi-final sim day qualify hoise. Holebi game to Pakistan players Abdullah laga celebration nim day notable hoise. India laga first goal do 31st minute day Balal Mon Gangti pra score kurishe. Pakistan laga Muhammad Abdullah pra 43rd minute day penalty marikina score equalize kurishe. Goal score kura pishide Abdullah to aro talaga teammates to cha khai taka nishna ek kurishe junto India ke mock kura nishna dikhaishe. Second half te India laga Gunleiba Wangkin Rakpam pra 63rd minute te goal score kurishe aro 70th minute te Pakistan laga Hamza Yasir pra goal score kurishe. Hoilebi Rahan Ahmed pra 73rd minute te goal kurikina India ke match jitaishe. India do last homoy tak game control kurikina victory hasil kurishe. Former cricketer Yuvraj Singh to Enforcement Directorate laga age de jaise.
expert nam laga online betting app lagina link thaka money laundering case te puchtash kribole nimide dusra celebrities jenika cricketer Suresh Rania, Shankar Dhawan, Robin Uthappa, actor Mimi Chakraborty, Ankush Hazra aro Sonu Sob khan bi puchtash kribo nimite matishe idi pra janch kuri ase ki kinika idu celebrities endorsement nimite taikhan ki contact korise payment kinika hoise aro online betting India de illegal thakadu jani asa nai itu opor puchtash korise idu case to illegal betting aro tax chori kura logote link ase kote IX bet laga dangur role ase Nltv News now laga khobor de dagishe aro enika news aro update pai thakibole sai thakibi Nagland TV